Hello everyone, welcome to the platform of Diastrophic Learning with Prakash. Today we will going to discuss yet another important topic in geomorphology, which is earthquake. As we have recently witnessed the doublet earthquake in Venezuela, so I believe that it is the appropriate time where we can discuss the entire earthquake from basic to advanced. As we all are know that as far as the UPSC is concerned, this topic have a equal weightage in prelims and mains both, so that without any further delay, let's begin with the lecture. So the best method to start or begin this lecture is making synopsis of this topic first. So in this lecture we will going to cover what is earthquake, what is an earthquake, then what is body waves, then the causes of earthquake, then the classification of earthquake, then the scale where we can measure the magnitude and intensity, and then the global distribution of earthquake, and then we are going to discuss effect, and then we are going to discuss the most fascinating terms like earthquake doublet, and earthquake swarm, and then we will look into the recent change in the earthquake zones in India, and lastly at the end of this lecture we will look at the some PT as well as the mains question, so we can evaluate ourselves in a better manner. Okay, without further delay we are just come to the topic. What is earthquake? Earthquake is simply made up by two terms. One is earth and the second one is quake. Here the term earth do not refers to the entire plate, entire earth do not refers to the earth. In the context of earthquake, it refers to the earth surface, or most probably it talk about the crust, the uppermost part of the earth surface. Quaking, it means the shaking. The simple meaning of quaking is shaking or oscillation or tremors, or you can say that the vibration. So what does it mean by earthquake? Earthquake is what? The sudden shaking of the earth or abnormal oscillation, vibration and tremors mainly because of the internal disturbances is known as earthquake. Okay, I just wanted to write down the definition of earthquake. Earthquake refers to the sudden release of
energy waves, sudden release of energy waves due to mainly due to internal disturbances internal disturbances internal disturbance. Okay, it means why here we are not quoting the plate tectonics and anything, because there are multiple factors which are responsible for the disturbance, or the multiple factors are responsible for shaking, vibration and oscillation. Earthquake refers to the sudden release of energy waves mainly due to the internal disturbance, but external factors are also responsible for the shaking of the earth, for the shaking of the earth surface, Okay, it means earthquake is what? Earthquake is the abnormal or sudden release of energy. You can also define earthquake in a various methods or in a various definition, like earthquake is what? It is the rupturing and the oscillation of the rock due to the sudden release of energy, when the energy release and rock cannot be tolerating or bearing the pressure and suddenly it breaks according to the elastic rebound theory. तो ऐसे भी आप define कर सकते हैं. Now I just wanted to give you the some basics about the earthquake. Suppose that this is our earth and this is the area where energy firstly produced. This is the area inside the earth where energy firstly produced. That area will be focus, or it is called hypocenter. So focus or hypocenter is what? It is associated inside the earth, and focus or hypocenter is the place where the energy start or energy begins, and it begins because of the rupturing, sudden release of the energy. And we all are know that energy always travel in the form of waves. So from focus the energy release in all the direction. From the focus energy release in all the directions. Energy release हुआ. तो focus is what? Focus is the point inside the earth where the energy start to begin. Initially energy start to release, and the epicenter is the perpendicular nearest and nearest place above the focus. So epicenter is what? The epicenter is a perpendicular nearest above the focus. It is the nearest place above the focus and perpendicular and vertical. So it means what? Epicenter is the place which is perpendicular above the focus. Or you can also define the distance, the minimum time lag between P and S waves. ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एपीसेंटर इज व्हाट? इट इज द प्लेस on the earth surface where the P waves and S wave have minimum time lag from the focus. मतलब P और S wave को जहाँ सबसे कम टाइम लगे पहुँचने में from the focus to the epicenter, because epicenter is outside the earth surface and focus is inside the earth surface. So there is a much difference.
There are very common confusion or little bit confusion amongst the student. What is focus? The focus is inside, focus situated inside the earth, and epicenter is situated outside the earth surface, and epicenter is perpendicular, above, situated perpendicular above the focus, or you can define as the minimum time lag between P and S. It is more scientific, sound pretty good, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक. तो एपीसेंटर एंड फोकस वी हैव डन. नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज waves. What is earthquake waves? There are two type of waves. One is the body waves, one is the body waves, and second one is a surface wave. Second one is a surface wave. Body wave further divided into two part. One is the P wave, which is known as primary wave, and second one is the S wave, which is known as a secondary wave. And surface wave further divided into two parts. One is the love wave, and second one is the Rayleigh wave. Rayleigh wave. Okay, primary waves are known as P waves. Why it is called primary? Because of the velocity. Because from the focus, the primary wave is the fastest wave which reach over the epicenter. मतलब ये सबसे तेज वेव है जो एपीसेंटर तक पहुंच रही है. तो P wave is what? P wave is the fastest wave. It is the fastest wave, and it is a longitudinal wave. Longitudinal. It is a longitudinal wave. What does it mean by longitudinal wave? The wave which moves parallel to the path of energy propagation. अब जरा समझो भाई इसका मतलब क्या होता है. Suppose that this is the focus and energy travels in all the directions. Energy travels in all the direction. So the longitudinal wave in context of P waves are moving पैरेलल टू दी एनर्जी वेव्स. ये जो एनर्जी वेव का प्रोपोगेशन हो रहा है इसके पैरेलल जो वेव चल रही है, दैट वेव इज नोन एज द पी वेव, एंड इट बिहेव्स लाइक अ साउंड वेव, एंड दैट इज वाई इट बिहेव्स लाइक व्हाट? इट बिहेव्स लाइक अ साउंड वेव. तो यहाँ पे प्रॉपर्टी में क्या समझ सकते हैं कि पी वेव बिहेव लाइक अ साउंड वेव. पी वेव बिहेव लाइक अ साउंड वेव, and because of sound wave have stretch squeeze property, and that is why it have also the stretch and squeeze property. तो ये क्या करता है? stretch and squeeze करता है. उसके साथ साथ क्या है? it also passes from all type of medium, solid, liquid and gas. तो ये क्या करता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों से पास होता है. ओके, सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पी वेव्स. एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पी वेव? 11 किलोमीटर पर सेकेंड. इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पी वेव, एंड इट बिहेव्स लाइक अ लॉन्गिट्यूडनल वेव. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एस वेव is the S wave have the slower velocity than the P wave. S wave have slower velocity than the P wave, and S wave behaves like a transverse wave. Transverse wave किसकी तरह बिहेव करता है? ट्रांसवर्स वेव की तरह. what do you mean by transverse wave? क्या मतलब होता है ट्रांसवर्स वेव का? तो ट्रांसवर्स वेव्स it means, suppose that this is the focus and energy release from all the directions. एनर्जी तो हर डायरेक्शन में जा रहा है, एनर्जी रिलीज इन ऑल दी डायरेक्शंस. ट्रांसवर्स वेव हैव बिहेवियर. पी वेव्स में क्या बिहेवियर चल रहा था? द पी वेव्स आर पैरेलल टू द एनर्जी प्रोपोगेशन and they are the longitudinal waves, but the S waves are transverse waves and they are moving perpendicular to the energy propagation. कैसे मूव कर रहे हैं? perpendicular to the energy propagation. ये perpendicular,
and that is why there is a chance of more chance of destruction. तो यहाँ देखो ये परपेंडिकुलर चल रहे थे इधर, सॉरी पैरेलल, तो स्ट्रेच एंड स्क्वीज कर रहे थे. यहाँ पे क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर. इमेजिन करो ये एनर्जी का पाथ है, कोई वेव ऐसे चल रहा है, ठीक. वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड को भी ध्यान दो, हाइट, ठीक, क्रेस्ट एंड ट्रफ की ये भी देख सकते हैं. ओके, नाउ तो दिस एस वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव and the velocity of S wave is half of the P wave, half of the P wave, half of the P wave. And what is the average velocity? 5.5 kilometer per second. Thick. Without you can say that attending the whole lecture, do not make any kind of perception about the lecture. Okay, transverse wave. Transverse wave के बाद और क्या इसकी property है? S wave only passing through the solid medium. Solid medium, this is the most important feature or the characteristics of the S wave. Okay, now chunki this is not the topic which is related to the internal structure of the earth, so we can't discuss much or we can't go deeper, so we are just moving towards the surface wave. What is love wave? What is surface wave? Firstly, I just wanted to define surface wave. Surface waves are the waves when the P and S waves, when the P and S waves are reaching on the earth surface, the new set of energy is released, and this new set of energy, after reaching off, after thrusting of P and S wave, the energy which release, the vibration which release over the earth surface is known as the surface wave. And surface wave have no association, remark my word, surface wave have no association with the internal structure of the earth, and it means surface wave is something which produced from the epicenter, it is not produced from the focus. So surface waves are what? When the P waves and S waves are thrusting and it generates a new kind of energy over the rocks, and rocks are start to vibrating, that waves are known as the surface wave. And surface wave have two waves, love waves. Love, we as we all know that love is the most destructive thing. तो यहाँ पर love क्या है? Love wave is the most destructive wave because its velocity is ranging between 2 to 3 किलोमीटर पर सेकेंड, ये सबसे ज़्यादा इसका वेलोसिटी है. एंड रेले वेव द वेलोसिटी ऑफ रेले वेव इज 3 to 5 किलोमीटर पर सेकेंड. तो दिस इज रेले वेव. एंड लव वेव is most of the time it is responsible for tsunami and other things. So this is all about the brief kind of discussion about the earthquake waves. Okay, now again we are come to the topic कि हमारा topic क्या था. Our topic is what is earthquake. We have done with the basic meaning, we have done with epicenter, we have done with the focus, and we have done with the body waves. Now we are just going to discuss the causes which are responsible for the earthquake. What are the cause are responsible behind the earthquake? Causes of responsible, the causes which is responsible for the earthquake is further divided into two parts. One is the natural causes, and the second one is the anthropogenic causes. Anthropogenic causes and the natural causes. Natural causes further divided into two parts. One is the terrestrial causes, and second one is the extraterrestrial causes. Terrestrial causes.
And in the anthropogenic causes, later we will discuss. Firstly, we are just going to discuss the terrestrial causes. Terrestrial causes are those causes which are naturally happen and which are associated with the earth. The first one is the faulting and fracturing. The second one is the volcanism. Third one is the radioactivism. The fourth one is the plate tectonic boundaries or plate tectonic theory, and the next one is the elastic rebound theory, which was proposed by Professor Reed, and the next one is the landslides. Next one is the hot spot activity, and the recent geophysicist, according to the geophysicist, rotation of the earth, rotation of the earth, जो change in the rotation of the earth plus axial tilt on the axial tilt of the earth. These are the natural causes. Okay, now there are some extraterrestrial causes. Extraterrestrial causes are those which are not directly associated with the terrestrial activities. Extraterrestrial causes are the meteoric blast or the collision, meteoric blast or comet collision over the earth surface, which further lead to the vibration or resultant in the oscillation or vibration and tremors. Now next one is the anthropogenic causes. Anthropogenic causes have so many causes, and recently anthropogenic activities or the human activities are the sufficient responsible cause of the earthquake. First one is the mining activities. The second one is the ejection methods. In this method, first one is the carbon capturing. The second one is the exploitation of shale gas. Third one is the dumping or ejection of waste inside the earth. Okay, the second one is the ejection method. Third one is the constructional work. Fourth one is the reservoir induced earthquake, and fourth one is the isostatic disturbances. You can relocate them into the natural causes as well, but isostatic disturbances. And then
the, you can say that the constructional work and the nuclear testing. So these are the causes which are responsible for the earthquake. These are the main causes. You can add more: the terrestrial causes of faulting and fracturing, volcanism, radioactivism, plate tectonic boundary, elastic rebound theory, landslides, and hotspot activity, rotating of the earth or axial tilt of the earth. You can also add here the you can say that isostatic earthquake. Extraterrestrial causes are those causes which are not directly associated with the earth, like meteoric blast or meteoric collision on the earth's surface. In the past geological history, that cause is also the one of the reason of the earthquake and tsunami and volcanicity. And these are the, you can say that the anthropogenic causes, like mining activities, ejection method, carbon capturing, constructional work, reservoir induced, isostatic disturbances, nuclear testing. One more I just wanted to add here is a war zone. Recently we have seen so many war between Ukraine and Russia, Israel and Middle East. तो ये सब भी है. These are also the responsible for the minor tremors or shaking. Now one by one we are just going to discuss the natural causes first, and then we will later on discuss all these. The first cause is faulting and fracturing. As we all are know that, what is faulting? Faulting is the sudden crack on the rocks because due to the stress. क्या हो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है रॉक के अंदर, एंड सडनली रॉक स्टार्ट टू ब्रेक बिकॉज ऑफ द टेंसाइल फोर्सेस. तो क्या होता है, टेंसाइल फोर्सेस की वजह से, बिकॉज अर्थ इज अ वेरी डायनेमिक बॉडी, देयर आर सो मेनी चेंजेस आर गोइंग ऑन, आइदर इट द एक्सटर्नल चेंजेस और द इंटरनल चेंजेस. तो फॉल्टिंग एंड फ्रैक्चरिंग कैसे होता है, बिकॉज ऑफ द टेंसाइल फोर्स इज मैक्सिमम. व्हेन द टेंसाइल फोर्स इज मैक्सिमम, देन सडनली रॉक स्टार्ट टू ब्रेक. तो एक शार्प जो है क्रैक डेवलप हो जाता है, विच इज नोन एज फॉल्टिंग एंड फ्रैक्चरिंग. वल्केनिज्म क्या है, वल्केनिज्म ऑलवेज कम विद द सिस्मिसिटी, सिस्मिसिटी के साथ आता है. तो वल्केनिज्म क्या है, व्हेन द मैग्मा इज राइजिंग एंड ब्रेक द क्रस्ट एंड ऑल द मैग्मेटिक मटेरियल्स इज आउटपोरिंग इन द फॉर्म ऑफ लावा. तो वल्केनिज्म इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थक्वेक. वाई? बिकॉज volcano या volcanicity is always come up with the seismicity. Seismicity, it means the study of earthquake or the study of tremors or shaking. तो वल्केनिसिटी इज ऑलवेज कम विद द सिस्मिसिटी, मतलब जब भी वल्केनो आएगा तो वो बहुत सारा ट्रिमोर्स, वाइब्रेशन, शेकिंग ये करेगा, ठीक. एंड one more thing you have to remember here, that all the earthquake have not mandatory have the volcanicity, but all the volcanicity have essentially or mandatory with the seismicity. मतलब सारे जो volcanicity है, जो volcanic eruption हो रहे हैं, उसमें earthquake तो आएगा, but all the earthquake cannot come up with the volcanic eruptions, mandatory volcanic eruptions. Okay. Radioactivism, we all are know that at the below the 70 kilometer there is a abundance amount of radioactive materials are pile up and concentrated, and radioactive minerals have the property to itself break and release the energy, and they are also the responsible cause of shaking of the earth. तो radioactive minerals जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ठीक, प्लूटोनियम हो गया, these are the substances which are responsible for the shaking of the earth. Now we are just going to discuss the plate tectonic boundaries in detail. So the plate tectonic, 80 to 90% of the earthquake is responsible, or earthquake is occurring at the plate boundary, and that is why plate tectonic is the most important topic. So we will going to discuss in detail. तो plate tectonic,
theory or the plate tectonic boundaries. There are three type of interaction, mainly there are three type of interaction in the plate boundary which are causing the earthquake. One is the convergent plate boundary. One is the convergent plate boundary, or you can say that destructive plate boundary. The second one is the divergent plate boundary, or you can call it the constructive plate boundary. Constructive plate boundary. And third one is the conservative plate boundary, or the parallel plate boundary, or the transformed plate boundary. And the recent, you can add the fourth one is the gliding plate boundary. ये आपको बुक्स में नहीं देखने को मिलेगा, विच इज अ वेरी रेयर और द रिसेंट फिनोमेना, ग्लाइडिंग प्लेट बाउंड्री. एंड यू कैन कॉल इट अ स्लाइडिंग प्लेट बाउंड्री. इसको आप क्या बोल सकते हो? स्लाइडिंग प्लेट बाउंड्री. ओके, these are the four type of interaction which is responsible for the shaking and the vibration of the earth. So one by one we are looking each. The convergent plate boundary, firstly we are just going to look at the convergent plate boundary. Convergent plate boundary, it means when the two plates are moving in a same direction or interacting with each other. When the two plates are moving in a same direction and interacting with each other. When the two plates are moving in a same direction and interacting with each other, the denser one is subducted under the less denser one. This is the less denser one, and this have the higher density. This have a higher density, this have a lower density, and the higher or denser plates are subduct under the less denser plate. And that is why when subduction take place, there is a possibility of medium to high magnitude of earthquake occurs. तो क्या होगा? When the higher or denser plate is subducting, there are four focus has been created according to the Benioff zone. Benioff is the scientist who identify the subduction zone. According to the Benioff, when the denser plates are sliding, and when the denser plate is subducting at the angle of 45 degree. तो according to this, plate किस angle पर subduct करता है? Minimum at the angle of 45. According to the Benioff zone, when the plates are subducting, they creating four focus. कितने focus? F1, F2, F3 and F4. तो F4 कितने सारे फोकस पर, इतना आपको डिटेल में नहीं जाना है, बस ऐसे ही बता दिया. आप एग्जामिनर को लिख करके बता सकते हैं. सबडक्शन टेक प्लेस मीडियम टू हाई मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक. तो हियर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ट्रेंचेस. यहाँ पे formation of trenches होगा. There is a possibility of tsunami when the plates are subducting and moving inside the earth. As we all are know that as we move from crust, or as we move from surface towards the interior, the temperature will increase. When the temperature will increase, the subducted part start to melt.
there is a partial melting and there is a magmatic differentiation, ये सब melt होने लगेगा, तो which further lead to the another series of earthquake. तो इससे बहुत सारा earthquake आ सकता है, ठीक. और it is highly catastrophic. क्या होता है, हाईली कैटेस्ट्रॉफिक है, एंड मैग्नीट्यूड इज बिटवीन 5 to 10 के बीच का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ सकता है. ओके, नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस सेकेंड, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री और द कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री. डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज आर व्हाट? तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज आर व्हेन द टू प्लेट्स आर मूविंग in opposite direction, when the two plates are moving in opposite direction because of the continuous thrusting and pushing by the magma is continuous pushing in a opposite direction. When the magma rises and pushes below the crust or below the plate and it continuous thrusting, and after some time, मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, crustal thinning होता जाता है and it will eventually break and both the plates are moving further apart, and when both the plates are moving further apart, magma easily comes out on the earth surface and creates the central ridges, and this type of earthquake is mild. This type of earthquake is, you can say that, foky, shallow, entertaining, but regular, not periodic, and continuous volcanicity. And because of this reason it is the constructive, because at the central part there is a formation of new crust. यहाँ पे continuous formation of new crust हो रहा है, ठीक. entertaining है, shallow है, regular earthquake है, and that is why this is the zone for volcanic tourism. तो यहाँ पे वल्कैनिक टूरिज्म भी बहुत सारा होता है, बिकॉज प्लेट्स आर मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एंड दैट इज़ वाई द वैक्यूम हैज़ बिन फिल्ड बाय द इनसाइड द मैग्मा. जो इनसाइड से मैग्मा आ रहा है वो वैक्यूम को फिल कर दे रहा है, एंड इट विल क्रिएट द न्यू क्रस्ट, एंड दैट्स वाई हियर द अर्थक्वेक इज मॉडरेट टू लो टू मॉडरेट. यहाँ अर्थक्वेक क्या है? लो टू मॉडरेट, एंड मोस्टली द magnitude is less than 4.5 magnitude, less than 4.5 magnitude है, ये भी ध्यान रखना है. Okay, now the third one is the conservative plate boundary or transform plate boundary or the parallel plate boundary. Okay, तो one by one हम लोग एक एक डिस्कस कर रहे हैं. तो कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री और द पैरेलल प्लेट बाउंड्री में क्या हो रहा है? व्हेन द टू प्लेट्स आर पासिंग parallel but in opposite direction to each other. When the two plates are passing parallel to each other, but it's not like that कि बिल्कुल plain होगा. तो when the two plates are passing and rubbing each other because of friction and because of rubbiness, ऐसे देखो, because of friction, because of rubbiness, there is a medium or there is a moderate to high frequency, moderate to high rate of earthquake. यहाँ क्या होगा भाई? तो यहाँ पे हो रहा है when the two plates, parallel plate boundary मतलब when the two plates are moving and passing to each other, but the boundary between the two plates, the edge of the two plates are rubbing and continuous rubbing to each other, and because of rubbiness this place have a moderate to high rate of earthquake, chance of moderate to high rate of earthquake. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? moderate to high rate, but it is also regular, not like divergent plate boundary, but it is regular as compared to the
convergent plate boundary, because convergent plate boundary have periodic earthquake, but here the you can say that the parallel plate boundary have a regular earthquake but not like the divergent. Divergent में ज़्यादा regular है, इसको हम पीरियोडिक नहीं बोल सकते क्योंकि ये पीरियोडिक नहीं, उसके कंपेयर में इसमें ज़्यादा फ्रिक्वेंसी और फ्रिक्वेंट अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक है. ओके, नाउ द लास्ट वन इज द ग्लाइडिंग प्लेट बाउंड्री. द ग्लाइडिंग इज व्हाट? द ग्लाइडिंग प्लेट बाउंड्री. तो ग्लाइडिंग प्लेट बाउंड्री का मतलब होता है, एंड फर्स्टली आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि ग्लाइडिंग प्लेट बाउंड्री टर्म आया कहाँ से. दिस टर्म ऑफ ग्लाइडिंग प्लेट बाउंड्री इज सीन इन द tsunami incident in 2004 where this Sunda plate and Indian plate is moving easily, gliding, and suddenly it, you can say that, subduct. तो क्या हो रहा है? ग्लाइडिंग का मतलब होता है ईजिली पास करना, ग्लाइड करना, मूव करना, और ग्लाइड करते हुए सबडक्ट कर गया. ठीक, तो ग्लाइडिंग प्लेट बाउंड्री इज द अनदर प्लेट बाउंड्री विच कॉज द अर्थक्वेक. तो ये एक और सब टाइप कह सकते हैं कि एक तरीके से सबडक्शन का है, और यहाँ पे हमने एक नया टॉपिक ले लिया है, ग्लाइडिंग प्लेट बाउंड्री. ओके, नाउ वी हैव टू बैक टू आवर फर्दर सिनॉप्सिस. इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी. व्हाट इज इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी? इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी was propounded by Professor Reed. Professor Reed has studied the California's San Andreas fault, and Professor Reed says that कि यहाँ पर क्या हो रहा है, when two plates are passing each other, because of the stress there is every rock have the elastic capacity to bear the stress. After the crossing the elastic capacity of bearing the pressure of the rock suddenly break and rebound the new settlement. तो क्या होगा? कोई मान लो रॉक है, ये कंटिन्यूस रब कर रहे हैं, and every rock have the elastic capacity to bear the pressure. When the any pressure is exceeded its elastic capacity, it means rock suddenly break and release the earthquake or release the shaking or the vibration. तो इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी क्या कह रहा है कि भाई कोई भी दो प्लेट्स हैं, सैन एंड्रियास फॉल्ट के कॉन्टेक्स्ट में ले ले रहे हैं, both the plates are moving in opposite direction, which is similar to the transform plate boundary, and but the pressure of the rock, the elastic capacity of the rock, मतलब bearing, जो प्रेशर बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द रॉक है, अगर इफ द प्रेशर इज एक्सीडिंग मोर देन द इलास्टिक कैपेसिटी, तो वो रॉक सडनली ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होकर के अर्थक्वेक या ट्रिमर या शेकिंग को जनरेट करेगा. ओके, नाउ द लैंडस्लाइड्स. we all are know that under the gravity there are so many rocks are falling down along the slope. तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि लैंडस्लाइड नेचुरली कैसे कॉज हो रहा है, बिकॉज अर्थ इज अ रोटेटिंग बॉडी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज दैट दिस इज द माउंटेनियस स्ट्रक्चर एंड लैंडस्लाइड्स आर अकरिंग इन अ न्यू फोल्डेड माउंटेन एज वेल एज द ओल्ड फोल्डेड माउंटेन. तो मान लो न्यू फोल्डेड माउंटेन है, द स्लोप ग्रेडियंट इज हाइयर. when the slope gradient is higher, the slope is look like steeper. The steeper slope have, suppose that here there is a weight, some weight of rock, and slope gradient is very sharp. Under the impact of gravity, that rock, boulder and pebbles and stones are suddenly moving and reaching at the foothills of the mountain. तो ये लैंडस्लाइड की वजह से भी एक माइल्ड जो है, मॉडरेट टू माइल्ड अर्थक्वेक आ सकता है. ओके, नाउ वी आर जस्ट अगेन बैक टू दी हॉटस्पॉट एक्टिविटीज. हॉटस्पॉट एक्टिविटीज आर व्हाट? तो हॉटस्पॉट्स आर व्हाट? तो हॉटस्पॉट्स आर द जियोलॉजिकल मिस्ट्री व्हेन द मैग्मा कम्स फ्रॉम द कोर मेंटल बाउंड्री. जरा देखना भाई, व्हेन द मैग्मा कम्स फ्रॉम द कोर मेंटल बाउंड्री. यहीं पे मैं आपको बताता हूँ कि हॉटस्पॉट एक्टिविटीज क्या हैं. सपोज दैट दिस इज द अर्थ कोर, this is the inner core, this is the outer core, this is the mantle, and this is the crust, and this is the earth surface. When the magma comes from the core mantle boundary, when the magma
comes from the core mantle boundary. It is not associated with the asthenosphere, and that is why hotspots are not connected with the plates. They are connected with the core mantle boundary, and that is why they are static in nature. And that is why when the plates are moving, the part which is below the hotspot, there is a continuous series of volcanic mountains, and it is a geological mystery because most of internal structures information is rooted in the mystery. Okay, तो ये volcanic eruption करता है when the magma rises from the core mantle boundary. It is mafic और अल्ट्रा बसाल्टिक. ये क्या होता है? अल्ट्रा बसाल्टिक होता है. अल्ट्रा बेसिक कह सकते हैं, अल्ट्रा बेसिक. ओके, अगेन वी आर कम टू द टॉपिक भाई, रोटेटिंग ऑफ द अर्थ और एक्सियल टिल्ट ऑफ द अर्थ. इफ देर इज अ चेंज इन द रोटेशन ऑफ द अर्थ, देन इट विल अफेक्ट द मोशन ऑफ द प्लेट्स. तो इस पर अभी जियोफिजिक्स ने नया रिसेंट जो है एक तरीके से रिसर्च किया है और देखा है कि इफ़ देर इज़ अ रोटेशनल चेंज इन द इफ़ देर इज़ अ change in the speed of rotation of the earth, it will definitely impact the plate movement and it will further create the kind of earthquake. So this is all about the terrestrial causes, and next one is the extraterrestrial causes. Extraterrestrial causes, it means meteoric blast. We all are know that कि dinosaurs were died because of meteoric blast. तो one of the reason कहा जाता है कि meteoric blast है. So when the meteoric blast any object from outside the earth's gravity, when the objects are entering into the earth gravity is just pulling down in a very stronger manner. तो बहुत तेजी से कोई object आता है, it will collide, it will definitely create some shakes and vibration on the earth's surface. Now we are just moving towards the anthropogenic causes. Anthropogenic causes क्या है? Mining activities. There are two type of mining. One is the surfacial mining, the second one is the vertical mining. तो इसी surfacial mining और vertical mining में एक mining होता है जिसे बोलते हैं rat hole mining. rat hole mining. तो rat hole miners क्या करते हैं भाई? Rat hole miners are simply doing, suppose that this is the mountain, they are starting to dig the mountain's bottom in a horizontal manner and gradually they are moving inside the earth. So sometime this roof has been collapsed and it will create the mild tremors or shaking. तो ये हो सकता है रूफ गिर जाए, तो जिसको रूफ कोलैप्स बोलते हैं वो हो सकता है. इजेक्शन मेथड क्या है भाई? इजेक्शन मेथड का मतलब है व्हेन बिकॉज ऑफ ह्यूमन एफर्ट, बिकॉज ऑफ द आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी वी इजेक्ट समथिंग इनसाइड द अर्थ. First one is carbon capturing. As we all are know that we are witnessing the global warming and greenhouse gases are continuous increasing in percentage and the concentration of carbon dioxide is also increasing. तो carbon capturing में हम क्या कर रहे हैं? We just drag or the carbon or drag, you can say that कि we can catch up और यू कैन से दैट कि भाई जो कार्बन है उसको कैच किया और इनहेल कर दिया इनसाइड दी अर्थ. तो इसको बोलते हैं कार्बन कैप्चरिंग करना थ्रू दी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी. सेकेंड वन इज द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सेल गैस. सेल गैस के एक्सप्लॉइटेशन के लिए क्या करना पड़ता है हमको? अब इसमें कार्बन कैप्चरिंग में और सेल गैस बोथ का समझना. कार्बन कैप्चरिंग में क्या करें? व्हेन वी आर exerting or inserting the CO2, it will create rift, it will create the gap. At this gap will be the kind of creating a stress, and if the stress is exceeding from its elastic capacity, so there is a sudden release of the energy. ये हो सकता है. Same goes with the exploitation of shale gas. Suppose that कि ये अर्थ का इंटीरियर और यहाँ सेल गैस है, तो पहले तो हमको बहुत सारा सेल गैस निकालने के लिए बहुत सारा यहाँ से क्या करना पड़ेगा? वाटर जो है प्रेशर डालना पड़ता है. बिकॉज ऑफ वाटर प्रेशर देर इज़ अ गैप एंड देर इज़ अ पोरोसिटी ऑफ रॉक्स एंड देर इज़ अ स्ट्रेस ऑफ रॉक्स. रॉक्स पे स्ट्रेस होगा. व्हेन देर इज़ अ स्ट्रेस ओवर द रॉक्स इट विल सडनली ब्रेक्ड. इन फ्यूचर ब्रेक हो सकता है तुरंत ना हो. तो इजेक्शन ऑफ वेस्ट का इजेक्शन कर रहे हैं. इट विल ऑल्सो क्रिएट सम फॉल्ट एंड फ्रैक्चर्स. कंस्ट्रक्शनल वर्क,
जैसे हिमालयाज, देयर आर सो मेनी कंस्ट्रक्शनल वर्क्स, देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स आर ऑपरेटिंग लाइक रोड रेल ब्रिजेस, बहुत सारा गवर्नमेंट बना रहा है और डायनामाइट से गवर्नमेंट इज स्टार्टिंग टू ब्लास्ट द रीजन विच आर इनएक्सेसिबल फॉर द एक्सेस और फॉर द कनेक्शन. Reservoir induced earthquakes, I just wanted to discuss in detail. Reservoir induced earthquake is what? This is the mountain and this is the slope, and we all are know that the mountain and rivers are in the mechanically balanced each other, बैलेंस ईच अदर. तो ये क्या करते हैं, एक तरीके से मैकेनिकली इक्विलिब्रियम में है माउंटेन्स एंड द फुट हिल्स, और व्हेन माउंटेन्स एंड रिवर्स बोथ आर इन अ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. अब यहाँ पे हो क्या रहा है, बिकॉज वी ऑल आर नो दैट द स्लोप इज वेरी स्टीपर. यहाँ पे हमने क्या किया, एक डिगिंग की और यहाँ पे एक डैम बना दिया. वी जस्ट स्टार्ट टू कंस्ट्रक्ट अ डैम. यहाँ पे एक डैम बना दिया, एंड बिकॉज रिवर हैव अ ग्रेटर वेलोसिटी, तो रिवर हैव अ ग्रेटर वेलोसिटी इन अ वेरी हायर स्पीड. तो यहाँ पे क्या किया हमने, रिजर्वायर बना के वी जस्ट स्टार्ट टू accumulate all the water. When we start to accumulate all the water, as we all are know that Himalayas are very young and new folded mountain, the structures are very kind of fragile. When the rivers are dancing over the slope, they are carrying lot of sediments, they are carrying lot of pebbles, stone and gravels, and they not only you can say that there is a accumulation of water, gradually there is a accumulation of so much or a huge amount of silt, and silt have so many sand, gravels, pebbles, stones and boulders, so many things, and there is a hydraulic pressure as well as there is a pressure of the siltation on the underlying rock. ये जो underlying rock है, this have a extreme pressure. At certain point of time when the elastic capacity has been bricked, or when the rocks bearing capacity is exceeded, this suddenly break and release the energy, and this also breaks the reservoir, and it will create the huge seismic event. तो ये क्या कर सकता है, ह्यूज सिस्मिक इवेंट कर सकता है. रिसेंटली वी हैव सीन द टिल्टिंग ऑफ द भाखरा नांगल डैम इन पंजाब. अभी हम लोगों ने देखा है कि जियो फिजिक्स ने कहा है कि उसका जो रिजर्वायर का बाउंड्री है वो थोड़ा बेंड हो रहा है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोलिक प्रेशर एंड बिकॉज ऑफ द सिल्टेशन ऑफ द पेबल्स, boulders and stones. Okay, now the last one is the nuclear blast. Nuclear testing is also the zone. Nuclear testing where we can test जैसे like पोखरण is the example. पोखरण में approx 4 point something magnitude का earthquake आया, mild. War zones are also because there are so many bombardments between the countries or the enemy countries. The isostatic disturbances are lies in both categories, natural and anthropogenic. Isostatic disturbances are what? I just wanted to discuss what is isostatic disturbances. On the rotating earth, you will be surprised, there are so many different kind of landforms are in a very isostatic equilibrium. There are lot of mountains, there are lot of plateau, there are lot of hills and rivers, or you can say that the valleys, mountains, plains. There are n number of landforms, and there are diverse range of landforms are in a very mechanically isostatic or in the state of equilibrium. State of equilibrium में है, but due to the exogenetic forces, suppose that due to the exogenetic forces, this is the mountain and this is the hill and this is the, you can say that lake, and this is the plain and this is the ocean. This is the ocean and this is all about the physiography. ये हमने आपको physiography में बताया. This is the mountain, this is the plain, this is the lake, this is the plain
and this is the ocean. When the rivers are, because of exogenetic agents, when the rivers are denuded, you can say that because of weathering and erosion, when the rivers are eroding or you transporting the weathered material from the slope of mountain, यहाँ से ये पूरा पार्ट काट के ये ले आए इधर डिपॉजिट कर दिया इन द ओशन, तो दिस वेट हैज़ बीन लाइटर, पहले ये वेट था, and because of the exogenetic agents, because of running water, because of the wind, because of the rainfall, so many causes, बहुत सारे factors responsible हैं because of exogenetic, you can say that the modification की वजह से क्या हुआ, continuous rivers are modifying and transporting the weathered material with themselves, and you can say that influx into the ocean or at the mouth of ocean, so that mountain become lighter. When that mountain become lighter, so earth have itself the mechanism to make all the structure in the state of equilibrium. So earth क्या करता है, उस weight को maintain करने के लिए there is a एक तरीके से there is a isostatic shaking करके weight को balance कर देगा, ठीक, कि कहीं पर ज़्यादा वेट ना हो, कहीं पे कम वेट ना हो, तो इसी को बोलते हैं आइसोस्टैटिक अर्थक्वेक. आई होप दैट विल क्लियर. अब उसके बाद हम लोग आ रहे हैं लास्ट, क्या है सिनॉप्सिस में देखते हैं भाई हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ द अर्थक्वेक. ओके, नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ द अर्थक्वेक, द क्लासिफिकेशन ऑफ द अर्थक्वेक ऑन द बेसिस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, ऑन द basis of plate tectonic, on the basis of plate tectonic, there are three type of depths. तो पहला क्या हो जाएगा, shallow depth. The second one is the intermediate depth, and third one is the deep or plutonic depth. The shallow depth is lying between 0 to 70 kilometer. Intermediate depth is lies between 70 to 300 kilometer, and deep or plutonic is ranging between 300 to 700 kilometer. This is the shallow depth. You have to remember the thing, the more the shallower the depth, the more the shallower the depth, the more the shallower the depth, the more destruction will take place, and the more the deeper, the more the deeper the focus, the less will be the impact. Why ऐसा क्यों है भाई? Because suppose that this is the earth and this is the focus. When more the deeper the focus, energy, the body waves is traveling more distances to reach towards the earth surface. बहुत ज़्यादा distance और बहुत ज़्यादा time और energy लगेगा earth surface तक पहुँचने में. तो जितना ज़्यादा time लगेगा और energy लगेगा, उतना ज़्यादा energy का loss होगा. ये तो एकदम simple सा formula है. The more the waves are traveling inside the earth, the more the energy will be loss. The more the energy will be loss. तो इसका मतलब क्या है? The lesser the focus,
द मोर द डिस्ट्रक्शन, जितना लेस फोकस का होगा फ्रॉम द अर्थ सरफेस, मान लो 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, तो इट मीन्स इट हैव मोर चांस ऑफ डिस्ट्रक्शन. एंड द डीपर द डेप्थ, द normally the deeper the depth and the lesser will be the destruction. Okay, बता दिया आपको, because the more the body waves are traveling they lost more amount of energy. तो जब ऊपर पहुंचेंगे तो उनके पास एनर्जी बचेगा नहीं, तो वाइब्रेशन क्या होगा. ठीक, ये भी समझ सकते हैं. ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ वी हैव डन इट. ये हमने देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ. Now we are just going to discuss on the basis of region. On the basis of region. On the basis of region. On the basis of region or location, you can call it location. So there are two type of earthquake happening. One either on the कॉन्टिनेंट और ऑन दी ओशन. तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द अकरेंस. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द अकरेंस, नेचर ऑफ द अकरेंस. नेचर ऑफ द अकरेंस से कैसा हो सकता है. देयर आर टू टाइप ऑफ अर्थक्वेक. द फर्स्ट वन इज नेचुरल. Second one is anthropogenic, which we have already discussed. ये भी कर सकते हैं. Now the next one is the measurement of the earthquake. Measurement of the, yeah, you can say that the scale, या measurement ही लिख लो. Measurement of the earthquake. There are two type of scale. Mainly there are two type of scale which can measure the earthquake. Earthquake मतलब उसकी energy को. The first is the Richter scale. The second one is the Mercalli scale. Richter scale is measuring the magnitude of the energy from the focus. And Mercalli scale measures the intensity of the destruction on the surface. इसका मतलब क्या है. Mercalli scale क्या करता है. Mercalli scale measures the intensity of destruction over the earth surface. कि सरफेस पे कितना नुकसान हुआ. It can be measured by the Mercalli scale and it is the manual scale है. ठीक. Where is the Richter scale? Richter scale is what? Richter scale is measuring the magnitude, how much amount of energy is released from the focus. Focus से कितना amount में energy निकला. Richter scale is a logarithmic scale. You have to write down here. The Richter scale is a logarithmic scale. What does it mean by logarithmic scale? Logarithmic scale इसका मतलब है this scale is moving from 1, 2, 3 and 4. Sequence alternate है. ठीक. It is a logarithmic scale. Richter scale is a open-ended scale. You have to remember it is a open-ended scale. Why it is open-ended? Because we all know that nobody knows how much amount of energy is released from inside the earth. कितना amount में energy निकल रहा है ये कोई नहीं जानता. And that is why this scale is open-ended, because in future, in upcoming near future, if the
amount of energy on the magnitude is more, then we can excel, or you can say that we can increase the number over the Richter scale. This is the scale where the each number, imagine 1 to 2, when increasing each number from 1 to 2, the 10 time magnitude, 10 time amplitude, not magnitude, 10 time amplitude is increased, and 32 times energy, 32 times energy is increased. ठीक, तो क्या पता चल रहा है कि when the number from 1 to 2 or 2 to 3 is increasing, 10 times amplitude is increasing and 32 times energy is increasing. Suppose that, जैसे मान लो एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ दिखाता हूँ with the help of map. जरा देखो रिएक्टर स्केल क्या कह रहा है, ईच लेवल इंडिकेट्स 10 टाइम द अमाउंट ऑफ सेकिंग, मतलब एम्पलीट्यूड. सेकिंग का मतलब यहाँ सिंपली क्या है, सपोज दैट एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, द मीन हाइट और द काइंड ऑफ क्रेस्ट. ये क्या है, क्रेस्ट है, एंड दिस इज द ट्रफ. द एवरेज हाइट बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ. तो ये एम्पलीट्यूड हो गया, इसका मतलब है सिस्मिक वेव्स का हाइट ओवर दी सिस्मोग्राम. ठीक, तो ये क्या बता रहा है, ईच लेवल इंडिकेट्स 10 टाइम द अमाउंट ऑफ सेकिंग और एम्पलीट्यूड एंड 32 टाइम्स, और 31.6 भी कहीं कहीं बुक्स में लिखा होता है, या 33 टाइम्स अमाउंट ऑफ एनर्जी. अब ये बता रहा है स्केल 1 2 3 पे कितना बढ़ेगा. ठीक, यहाँ पे बता रहा है कि नॉट फेल्ट, माइनर, स्मॉल, मॉडरेट, स्ट्रॉन्ग, मेजर एंड ग्रेट. ये सब ध्यान में रखना है आपको एग्जाम के दौरान. ठीक, तो इट इज व्हाट, इट इज अ मैग्नीट्यूडनल स्केल, इट इज अ लॉगरिथमिक स्केल, इट इज अ ओपन एंडेड स्केल, एंड इट इज अ ऑब्जेक्ट, इट शोज द ऑब्जेक्टिविटी. ये क्या है, ऑब्जेक्टिविटी का स्केल है, बता रहा है सब्जेक्टिविटी का स्केल नहीं, ऑब्जेक्टिविटी का स्केल है, बता रहा है कि इन फ्यूचर कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी निकला है, क्या निकल सकता है, इस तरह का. वेयर एज इन दी Mercalli scale it is a closed ended scale. ये क्या है, it is a closed ended scale, it is a closed ended scale. ठीक, and it is between 1 to 12. तो ये क्या होता है भाई, 1 to 12 है, ये भी ध्यान में रखना है. सेकेंड, here Richter scale is between 0 to 10 and some books are referring 0 to 9. 0 to 10 ही लिखें, 9 is not good. ठीक, 0 to 10 है. It is a open ended scale हो गया ये, and it is a closed ended. We have done most of the facts जो important थे. Now we are just going to back to the our synopsis. क्या क्या अभी हमें डिस्कस करना था इसमें. We have done with the scale. Now we are just moving to the global distribution of earthquake. Global distribution of earthquake. So we should take a picture of global distribution of earthquake. The global distribution of earthquake, global distribution of earthquake. There are mainly 3 belts where most of the earthquake is happening. One is the circum-Pacific belt. The second one is the mid-continental belt. Third one is the mid-oceanic belt. And the fourth one is the hot spot. Tick. And the last one is the anthropogenic spots.
एंथ्रोपोजेनिक स्पॉट, बात करेंगे इस पे, लाइक हिमालयाज एंड अदर थिंग्स. ओके, नाउ द सर्कम पैसिफिक बेल्ट is the most active, 60 to 70%, two-third the total number of the two-third, in the total number में से two-third of the earthquake and volcanicity is happening in this belt. Why happening in this belt? Because this plate is entire circum-Pacific belt is creating the subductional zone where the plates are converging, where the plates are colliding, and when the plates are colliding there is a huge possibility of seismicity and volcanicity, and that is why this zone is known as volcanismic zone. Circum-Pacific belt is known as volcanismic zone. Why? Because it forms the subductional zone. It provides the subductional zone where Pacific plate is consumed, because Pacific plate is denser plate, and Pacific plate is subducting under the less denser plates respectively. Either it is Philippines plate or any plate, North American and South American, and that is why this is also known as ring of fire. This zone is also known as ring of fire. तो यहाँ पर बहुत सारा सिस्मिसिटी हो रहा है, mainly because of the convergent plate boundary, the plates are subducting. Okay, and two-third the world's earthquake has been recorded in the ring of fire or circum-Pacific. Okay, I just wanted to make some handout map which creates a greater impact over the mind of examiner कि भाई इसको कैसे दिखाओगे. तो ऐसे बनाते हैं, Aleutian, then Alaska, then Rockies, then Andes, then Mount Erebus in Antarctica, then New Zealand, then Australia, then Papua New Guinea, then Philippines, ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, न्यूजीलैंड, देन ऑस्ट्रेलिया, देन गिनी, पापुआ न्यू गिनी, देन फिलीपींस, देन रियूको, देन जापान, देन क्यूराइल. तो ये आपका एक सर्कम पैसिफिक बेल्ट हो गया. और भी बहुत सारे चीज़ आप इसमें डाल सकते थे, पर ये इतना लिख दोगे तो ये अच्छा रहेगा. ठीक. ओके, नाउ वी आर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट. द सेकेंड वन इज द मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट. मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट हैव ऑल्सो mid continental belt have the convergent boundary. यहाँ भी क्या हो रहा है, convergent boundary. Mid continental belt have convergent boundary, but this mid continental belt have further divided into two parts. One is the alpine plate boundary या alpine areas, or the second one is the Himalayan areas, and here is the plate convergent. In the alpine there are two things. One is the live volcano along with the seismicity, matlab earthquake, and here no live volcano, no almost no live volcano
एंड हियर इज अ अर्थक्वेक। तो यहाँ अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा है। एंड हियर लाइव वल्केनो। वाई लाइव वल्केनो? बिकॉज हियर ओशनिक crust is still present and this is the subductional plate boundary, and here oceanic crust is almost consumed। ठीक, इसको भी मैप में यू कैन शो विद द मैप। कैसे मैप में शो कर सकते हो, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। इट स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। इट स्टार्ट फ्रॉम माउंट एटलस, तो यहाँ पे माउंट एटलस टू द कैंटाब्रियन, देन पिरनीज, then Alps, then Dinaric Alps, Carpathian Alps, then Caucasus, then Asia Minor, then Iranian mountains, then Hindu Kush, then you can say that, then the Himalayas, then Arakan Yuma, and then Andaman and Nicobar। You can show this। एग्जामिनर इससे बड़ा खुश होगा कि आपने बहुत कुछ बता दिया। एंड नाउ the last one is okay, now the last one is the mid oceanic belt। the mid oceanic belt is what? The mid oceanic belt, it creates the divergent plate boundary। divergent plate boundary, it is a kind of 21%। यहाँ 2/3 था, मतलब 70%। some books are referring 63%। it is 21% and it is almost 11%, and rest hotspot and anthropogenic are less than 1%। तो divergent plate boundary है यहाँ पे, when the two plates are diverging from each other, moving apart from each other, तो easily the magma is moving, easily the magma comes out on the earth surface। तो यहाँ पर फोकी था, सैलो था, माइल्ड था, ये मैंने मॉडरेट अर्थक्वेक थे, ये मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक, इसको भी तुम बता सकते हो फ्रॉम आइसलैंड टू दी अंटार्कटिका। ठीक, हॉट स्पॉट्स आर द जियोलॉजिकल मिस्ट्री, द मैग्मा कम्स फ्रॉम कोर मेंटल बाउंड्री, ऑलरेडी वी हैव डन इट। इस पे एग्जाम्पल कुछ लिख सकते हो, जैसे गैलापागोस आइलैंड, Galapagos Island in the South America near the Ecuador in the Pacific। एक तुम अटलांटिक का भी ले सकते हो, जैसे हम लोग ले सकते हैं त्रिस्तान डी कुन्हा इन नियर द ब्राज़ील इन दी साउथ अटलांटिक। एक इंडियन ओशन का भी ले लो, रीयूनियन हॉटस्पॉट। These are the example। Anthropogenic spots are those like Himalayas are the example, recent example of live example of anthropogenic spots। Okay, now we are again just showing on the map। देखो, this is all about the ring of fire। ये जो है this is all about the ring of fire और Pacific, circum-Pacific belt। कितना आ रहा है? 63% ऑफ द टोटल अर्थक्वेक सिस्मो वल्केनिसिटी दोनों हो रहा है। फिर दिस इज ऑल अबाउट द मिड कॉन्टिनेंटल वेयर द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, दिस इज ऑल अबाउट द 21%, एंड दिस इज द divergent plate boundary, this is the divergent plate boundary and which have 11% अप्रॉक्स। रेस्ट में क्या है? सम ऑफ द हॉटस्पॉट, जैसे यहाँ पे त्रिस्तान डी कुन्हा है, दिस इज रीयूनियन, यहाँ पे गैलापागोस है, डार्विन है, हवाईयन आइलैंड्स हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स। ओके,
Now we are just going to discuss the another part, the global distribution and the effect. अब आगे हम लोग इफेक्ट में, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ earthquake? So as we all are know that there are two type of effect. I am just focusing on the positive effect because most of the time teacher is focusing on the negative effect of the earthquake. There are n number of positive effect of earthquake as well, and then later we will discuss about the negative impact. Negative impact. So what is the positive impact? Positive impact क्या है? The first positive impact of the earthquake is the more the earthquake occurrence, the more we have knowledge about the earth's interior, because we all are know that the most of our information about the earth's interior is based on the seismic waves. The more the body waves are traveling inside the earth, the more we have knowledge about the behavioral, because today most of our knowledge about the earth's interior is either conjectural or indirect or rooted in the mystery. तो क्या होगा भाई? First, it also provide the information about the internal structure of the earth. Internal structure of the earth. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. तो सबसे पहले क्या बता रहे हैं? पॉजिटिव इम्पैक्ट. सेकेंड क्या हो सकता है? द मोर द अर्थक्वेक इट मेक्स मोर लैंड फॉर्म्स. जितना अर्थक्वेक आता है उससे नए नए लैंड फॉर्म्स बनते हैं. तो फर्स्ट कहीं पर रिफ्ट वैली बन सकता है, रिफ्ट वैलीज, कहीं पे प्लेटूज बन सकते हैं, समवेयर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हील्स एज वेल, हील्स बन सकते हैं. You can say that artificial या नेचुरल लेक्स बन सकते हैं बिकॉज ऑफ डिप्रेशन. ये हो सकता है. बिकॉज द मोर द अर्थक्वेक इज कमिंग एंड द मोर द earthquake is occurred over the earth's surface, the rocks are bricked, and when the more the rocks are bricked, it will help in the formation of soil. तो soil formation में भी help करता है. ठीक. और क्या हो सकता है भाई? When the more number of earthquakes in the coastal area, it will emerge some areas. emergence हो सकता है, उससे कुछ नई टोपोग्राफी बन सकती है. emergence and submergence हो सकता है. and because of submergence in the coastal area, it will help in the port building. natural port हो सकते हैं. बहुत सारा कोई एरिया जो है सबडक कर जाए, सबसाइड कर जाए या सबमर्जेंस हो जाए तो उससे पोर्ट बिल्डिंग हो सकता है. दीज आर द सम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स. व्हाट इज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक? जैसे एक और भी नेगेटिव इम्पैक्ट में आते हैं. व्हाट इज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक? द फर्स्ट नेगेटिव इम्पैक्ट इज द ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे अरे क्या हो गया? ये प्रॉपर्टी. ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. और क्या हो सकता है? लैंडस्लाइड्स. और क्या हो सकता है इसमें लैंडस्लाइड्स के अलावा? देयर इज अ फॉरेस्ट फायर. और क्या हो सकता है? लॉस ऑफ लाइफ हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, फॉरेस्ट फायर हो गया. रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक आ सकता है. और क्या हो सकता है इससे? तो हम लोग देखते हैं कि भाई नेगेटिव इम्पैक्ट में बहुत सारे लॉस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक, नहीं सोशल एंड साइकोलॉजिकल लिखते हैं. सोशल एंड साइकोलॉजिकल डैमेज हो सकता है. सोशल एंड साइकोलॉजिकल. सोशल एंड साइकोलॉजिकल डैमेज हो सकता है. और क्या हो सकता है इसमें? तो हम लोग देखते हैं कि
फॉरेस्ट फायर हो गया, एवलॉन्चेस हो सकते हैं, लॉन्चेस हो सकते हैं, लैंडस्लाइड्स हो सकता है, लैंडस्लाइड ऑलरेडी वी हैव मेंशन दैट दीज आर द सम इम्पैक्ट्स, ये हो सकते हैं. एंड दे ऑल्सो क्रिएट सम पासेज, इससे पासेज भी हो सकता है, एक ऐड हम लोग ये भी कर सकते हैं पासेज. एंड नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस. देखो डिजास्टर वाला पार्ट हम भैया हम लोग छोड़ दे रहे हैं बिकॉज इट्स अ पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर फर्स्ट की बात करें तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनी डिजास्टर. बट थोड़ा बहुत अगर आपको डिजास्टर के बारे में जानना है तो मैं इतना बता दूंगा कि अर्थक्वेक के डिजास्टर के लिए बिफोर दी 2005 we our main focus on the during disaster management, but after the disaster management act 2006 we have a framework and we have a disaster cycle which have pre-disaster, which have during disaster and the post disaster. तो pre disaster में हम लोग preparedness करते हैं, education awareness, retrofitting of building, early warning system ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं. मतलब प्री डिजास्टर पे वी आर मोर फोकसिंग to mitigate or to reduce the impact of earthquake as a natural hazard. Okay, now we are come to the topic कि और क्या क्या इसमें अभी हमें रेस्ट डिस्कस करना है. तो now we are just going to discuss earthquake swarm and earthquake doublet. तो भाई अब देखते हैं कि what is earthquake swarm. तो before we are going to discuss what is earthquake swarm, I just wanted to show you something. There is a sequence, there is a sequence of earthquake, there is a series of the sequence of earthquake. Firstly there is a foreshock and suddenly there is a high magnitude of energy release which is known as the main shock, and then there is a low amount of energy is released which is known as aftershock. There is a sequencing. तो पहले क्या होता है, this is the foreshock, सबसे पहले क्या आता है, this is the foreshock. Shocks are what? Shocks are the energy waves. Foreshocks, it means the preceder shocks or the shocks which are occur before the main shock. So this is the foreshock. This is the main shock where the highest amount of energy has been released, and this is the aftershock. This is the aftershock. ठीक. So I hope that will clear कि what is foreshock. Foreshocks are the preceder shocks. Aftershocks are the resettlement shocks which occurred after the main shock, and it have always less magnitude than the main shock. Okay. Now what is the earthquake swarm? Earthquake swarm. What is the earthquake swarm? Swarm, it means there is a series. There is a series or झुंड, or there is a continuous series. Earthquake swarm, it is the series of earthquake, but there is no identification, there is no identification of main shock. There is a no identification of main shock. ठीक. तो earthquake swarms are the series of earthquake, series of, you can say that the mild or moderate earthquake where we are not able to identify the place of main shock or the place of focus, but we feel the continuous tremors, and it can happen, the earth series of earthquake is happen more than 1000 within 1 hour, ये भी हो सकता है, and it have the continuous series, and the shaking is very mild or the moderate. The series of earthquake है, and the main feature is there is a no identification of main shock. इसमें हमें main shock के बारे में नहीं पता, but there are multiple views on that कि भाई earthquake swarm क्यों आता है, what is the reason behind the earthquake swarm. तो there are multiple views on it. Some geographers are referring that कि भाई ये volcanic eruption नीचे से magma is pushing it. Some others are saying that कि because of some cracks are developed
and because of cracks are developed, and that is why due to the development of crack there is a sudden release of energy which is very moderate and mild. ऐसा there are n number of views, but now at that time no view have the proper explanation at the satisfactory level, and that is why we are avoiding to explain it. Okay, now we are just going to discuss what is earthquake doublet. It is the most fascinating thing, and there is a high probability when it comes in the upcoming examination. तो earthquake doublet को देखते हैं भाई कि what is earthquake doublet. Earthquake doublet, why it is called doublet? Because of one reason कि in the normal earthquake, in the normal situation, there is a series of foreshock, then main shock and then aftershock. तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड बेटर. तो पहले नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, देयर इज अ फोरशॉक, फिर देर देन मेन शॉक एंड देन द आफ्टर शॉक. बट इन द अर्थक्वेक डबलेट देयर इज अ with the smallest gap in the time, there is a occurrence of two main and independent two independent shocks are generated. It means generated. It means इसका मतलब क्या पता चला भाई, there is a occurrence of two main or independent shocks are generated. मतलब here there is a no sequence like foreshock, main shock and aftershock. It is a two independent shock which have the smallest gap in time. तो and that is why it is called earthquake doublet. इसको क्या बोल रहे थे, earthquake doublet. क्यों बोला, why? Because there is a occurrence of two main and independent shocks are generated in a smallest time. पहला शॉक कितने मिनट में आया, पहला शॉक का जो मैग्नीट्यूड था वो 7.2 मैग्नीट्यूड का था, एंड आफ्टर 39 सेकेंड्स देर इज अ 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया. और दिस 7.5 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक में द फोकस इज 10 किलोमीटर बिलो, एंड दिस फर्स्ट वन हैव द फोकस इज 20.8 किलोमीटर बिलो. तो देखो द सैलो थे ये दोनों अर्थक्वेक. why it is called earthquake doublet and how it is different from the normal sequence of earthquake. तो normal sequence में क्या होता है, पहले foreshock, then the main shock, then the aftershock. but earthquake doublet में क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ. there is a two independent main shocks are occurring in a minimum time lag and minimum time lag. ऐसा हुआ क्यों, तो I just wanted to show you some pictures. कुछ एक पिक्चर अभी आपको दिखाते हैं और उससे आप समझ जाओगे कि ये हुआ क्यों ऐसा. ओके देखो दिस में यहाँ पे क्या हो रहा था, देखो यहाँ पे लिखा है मैग्नीट्यूड फर्स्ट 7.2 और सेकंड का 7.5 है और 10 किलोमीटर डेप्थ, और इधर 20.3 है. मैंने 20.8 बोला है, करेक्ट कर लीजिएगा. देयर आर 4 फॉल्ट्स हियर. यहाँ पे मेरे फिंगर्स को देखोगे, ये इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को देखो, ये 4 फॉल्ट्स थे और ये एक दूसरे से ट्रांसवर्स मूवमेंट कर रहे थे. कैसा मूवमेंट कर रहे थे, ट्रांसवर्स. दिस इज द कैरिबियन प्लेट. कैरिबियन प्लेट इज मूविंग ईस्टवर्ड एंड द साउथ अमेरिकन प्लेट इज मूविंग वेस्टवर्ड. तो ये क्या हो गया, पैरेलल मूवमेंट हो गया. व्हेन देयर इज अ पैरेलल मूवमेंट, अभी बताया था, व्हेन देयर इज अ पैरेलल मूवमेंट देयर इज अ फ्रिक्शनल, देयर इज अ फ्रिक्शन. व्हेन द प्लेट्स आर मूविंग पास्ट ईच अदर, तो यहाँ मूव कर रहे हैं तो ये फ्रिक्शन बीच में होगा. अब फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे देयर आर 4 फॉल्ट्स. तो एक दो फॉल्ट का नाम आपको याद रखना है, जैसे बोकोनो फॉल्ट है, सैन सेबेस्टियन फॉल्ट है. तो ये सारे फॉल्ट्स हैं, वो आप देख लेना. अब यहाँ हो क्या रहा है मेनली, देखो मेरे फिंगर्स को ध्यान में रखना.
ये प्लेट्स ऐसे मूव कर रही हैं और सडनली क्या हुआ, दिस वन ये स्लिप कर गया, स्लिप स्ट्राइक फॉल्ट हुआ, ये स्लिप स्ट्राइक फॉल्ट हुआ, तो ये सारा वेट किस पे आ गया, इस पे। तो पहला ऐसे था, प्लेट जा रही थी ऐसे मूव कर रही थी, दिस वन इज स्लिप्ड एंड होल वेट इज ऑन दिस फिंगर। तो पहले आया 7.2 एंड बिकॉज ऑफ दिस suddenly this whole pressure, that rock, that underneath rock cannot bear the pressure, it will suddenly break like this। अब देखो तो दूसरा झटका आ गया विद इन द टाइम, तो इसी को बोलते हैं 7.5 एंड दिस इज ऑल अबाउट द अर्थक्वेक डबलेट। ओके, द लास्ट वन is we are just going to discuss the revised seismic zones of India. In 2002, India's seismic zone India is divided into 4 seismic zones: second, third, fourth and 5. And now in 2025 this seismic zone has been revised। 2025 में हमने क्या किया, रिवाइज कर दिया है। and now there is a 5 zone and criterias are 6, zone 6, 5, zone 4, 3 and second। तो ये आपको देखना है कि भाई जहाँ से रेड कलर है वहाँ पे दिखा रहा है कि एक्सट्रीम, ये जो हिमालयस रीजन है एक्सेप्ट दी अक्साई चीन वाले रीजन को छोड़ दो, तो ट्रांस हिमालय को छोड़ दो, तो न्यू हिमालय से लेकर के होल नॉर्थ ईस्ट प्लस ये जो कुछ काठियावाड़ पेनिनसुला और रन ऑफ कच्छ का एरिया है उसमें, और प्लस whole Andaman and Nicobar is lies in the zone 6 which is very prone or which receives the frequent amount of earthquake। the second zone को zone 5 को देखो तो which lies along with the foothills of Himalayas, ठीक, तो foothills of Himalayas को देख सकते हो, दिल्ली का कुछ पार्ट उसी में आ रहा है। फिर zone 4 है, तो zone 4 को भी देख सकते हो, दिल्ली होल, दिल्ली राजस्थान का सम पार्ट। ये आप एक बार देखना, मैंने आपको ऐसे एक रिसेंट व्यू दे दिया है। जैसे जोन 6 इज द सीवियर जोन, द मोस्ट नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स आर कमिंग इन दिस जोन। फिर 5 उससे थोड़ा कम है, 4 उससे थोड़ा कम है, 3 इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम द सिस्मिसिटी एंड 2 में तो माइनर ट्रिमर्स और शेकिंग हो रहा है। नाउ एट द एंड ऑफ दिस सेशन वी विल लुक सम क्वेश्चंस सो वी कैन इवेल्युएट आवरसेल्फ इन अ बेटर मैनर। तो पहला प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या है भाई, जरा देखो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्थक्वेक स्वार्म। अभी पढ़ाया है, अभी चेक कर लेते हैं। तो पहला क्या है, एन अर्थक्वेक स्वार्म रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ अर्थक्वेक्स occurring in a localized region without a clearing identifiable main shock। अभी तो बताया था कि earthquake swarm में क्या है, there is a we are unable to find out the main shock or focus। तो the first statement is right। Second, earthquake swarm are commonly associated with the volcanic activity, hydrothermal processes और फ्लूइड मूवमेंट विद इन द क्रस्ट। अभी बताया कि इसके लिए कुछ नहीं कह सकते पर कॉमनली वर्ड लगाए, देखेंगे अभी हम लोग। थर्ड, एवरी अर्थक्वेक स्वार्म इज नेसेसरली फॉलोड बाय द मेजर डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक। तो अभी बताया इससे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, बट जियोफिजिस्ट्स आर सजेस्टिंग दैट इन फ्यूचर इट इज द इंडिकेशन ऑफ बिग और डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक। तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट एंड सेकेंड्स आर राइट। तो ए ऑप्शन होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिएक्टर स्केल एंड मर्केली इंटेंसिटी स्केल। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, रिएक्टर स्केल मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक बेस्ड ऑन द एनर्जी रिलीज्ड एट द सोर्स। अभी तो बताया था कि हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज फ्रॉम द फोकस इज मेजर्ड बाय द रिएक्टर स्केल। Second, the Mercalli scale intensity scale is based on the observed effects and damage caused by an earthquake। दोनों सही है। Third statement, Mercalli intensity scale assign the same intensity value at every location for the particular earthquake। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, हर जगह सेम तरह का नुकसान नहीं हो सकता, बिकॉज सरफेस का नेचर अलग अलग है, हजार्ड मिटिगेशनल प्रिपेयर्डनेस अलग अलग है। तो इससे फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन सही होना चाहिए, तो ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिस्मिक वेव्स। पी वेव्स आर बॉडी वेव्स एंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऑलरेडी वी हैव डन इट।
एस वेव्स आर बॉडी वेव्स बट कैन नॉट प्रोपोगेट थ्रू द लिक्विड्स, बिल्कुल सही बात है, एस वेव्स कैन ओनली ट्रेवल इन द सॉलिड्स. Third statement is surface waves travel faster than P waves and generally arrive first at the seismic station. अभी आपको बताया कि surface waves are the slowest waves. ठीक, surface waves सबसे धीरे चलते हैं, उनके velocity को भी लिखा था. ठीक, तो इसका मतलब हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन इज सही, इज राइट. ठीक, नेक्स्ट देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्थक्वेक डबलेट. ये भी ले लिया भाई, लास्ट क्वेश्चन भी जरा देखो. earthquake doublet refers to the two earthquake of comparable magnitude occurring close together in time and space. बिल्कुल सही बात है. Second, earthquake doublet are commonly observed near active plate boundaries where stress redistribution can trigger a second major events. Third, the recent earthquake doublet reported in Venezuela has renewed scientific interest in stress transfer between adjacent fault segment. तो ये देखो क्या कह रहा है, recent earthquake doublet reported in Venezuela has renewed scientific interest in the stress transfer between adjacent fault segment. ये जो अभी आपको बताया था ये, तो इसमें तीनों ऑप्शन सही होने चाहिए, 1 2 3. ठीक है, नेक्स्ट क्या है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्थक्वेक magnitude and intensity. First statement, magnitude is an intrinsic property of an earthquake and remains constant irrespective of the observer's location. बिल्कुल सही बात है. Intensity may vary from one location to another depending on the local geological condition and distance from the epicenter. ठीक. And third, two earthquakes having the same magnitude must always produce the same intensity at all places. तो ये हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड. थर्ड गलत हो गया. अभी आपको बताया था कि नेचर ऑफ द रॉक, नेचर ऑफ द सरफेस, ये सब मैटर करता है. लास्टली दो वर्ड्स हैं, एक तो है हमारे पास आइसोसिस्मल लाइन एंड सेकेंड वन इज द होमोसिस्मल. तो आइसोसिस्मल लाइन क्या होती है, व्हाट इज आइसोसिस्मल एंड व्हाट इज होमोसिस्मल. दी आइसोसिस्मल, आइसो इट मीन्स इक्वल, सिस्मिक या सिस्मल इट मीन्स सेकिंग या वाइब्रेशन. तो द प्लेसेस इट कनेक्ट्स the places having equal or same amount of intensity of magnitude of the earthquake. ठीक. और होमोसिस्मल का मतलब क्या होता है, इट कनेक्ट्स the places having same time of earthquake. तो ये क्या कर रहा है, होमोसिस्मल का मतलब क्या है कि एक ही तरह का अर्थक्वेक एक समय पर कहाँ आया. और इसमें क्या हो रहा था, आइसोसिस्मल में इट कनेक्ट्स द प्लेसेस हैविंग इक्वल और सेम अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक. तो इट्स ऑल अबाउट द होल सेशन where you can say that कि we will covering the entire earthquake from basic to advanced. I hope आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने enjoy किया होगा. लास्टली आपको ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर लिख करके कमेंट बॉक्स में देना है. व्हाट इज डबलेट अर्थक्वेक एंड व्हाई डज इट हैपेंस एंड व्हाट टेक्टोनिक कंडीशंस फेवर इट. तो इस क्वेश्चन को आपको लिखना है और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर देना है. और विदाउट वॉचिंग द होल वीडियो डू नॉट पास एनी काइंड ऑफ कमेंट.
Wish you all the best. Stay tuned with Diastrophic Learning with Prakash. Thank you so much.